بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. So this is our another session of our English spoken. How are you feeling today? So whenever I, because as I told you earlier, this is an interactive learning. It is a student-centric learning environment. So we are going through learning in a bilingual way. So even if a small hurdle comes while you are trying to speak in English, turn it into Urdu so that I could translate it for you. This is the way you will learn. All right. So how are you feeling today? Today I feel better. Well, thank you for asking. I'm feeling a lot better today. I'm feeling quite good. अच्छा, इसको अगर आप ओकेजनली कहना चाहते हैं, कोई आपका कोई ख़ास दिन है या कोई बहुत ज़्यादा कोई आप खुशी वाला दिन है, आई एम फीलिंग वेरी री इनविगोरेटेड टुडे. क्या री इनविगोरेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, ये बड़े बड़े क्लास के लोग जो यूज़ करते हैं. ठीक है, आई एम फीलिंग a little reinvigorated today. मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ. ठीक है, overwhelmed, आई एम फीलिंग overwhelmed today. जो ओवरवेलम्ड है, ये खुशी, गमी, दुख, गुस्सा जो है, वो हर चीज़ जो आपके माइंड से लेवल से अप हो जाए, उसके लिए आप ओवरवेलम्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ओवरवेलम्ड ज़्यादा जज्बाती होने को भी बोल सकते हैं. ठीक है, आई फेल्ट अ लॉट ओवरवेलम्ड आफ्टर सीइंग द ट्रेजिक एक्सीडेंट. I felt overwhelmed a lot at the time of departure of Bharat when the bride left her own home. जब बारात की रवानगी हुई, मुझे बहुत, I felt overwhelmed when a very hard working student did not stand first in the class. I felt a little overwhelmed that in spite of, बावजूद इसके, in spite of, बावजूद इसके, in spite of hard work, I could not stand first in the class. मुझे थोड़ा सा जज्बाती फील हो रहा है कि इतनी मेहनत के बावजूद मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन न ले सका. ठीक है, I felt a little overwhelmed at the tragic demise of the father of my friend. ट्रेजिक डिमाइज, हादसा न मौत. ठीक है, डिमाइज डेथ को भी बोलते हैं, DEMISE, डिमाइज. डेथ के लिए और भी बहुत से लफ्ज़ हैं. ठीक है, ठीक है, गोइंग टू द बैक ऑफ द वॉल, ये ईडीएम है. ठीक है, किक द बकेट, मर जाना. द फादर ऑफ माई फ्रेंड किक्ड द बकेट लास्ट नाइट. ठीक है, ये ईडीएम है. ईडीएम और फ्रेज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. As I told you earlier, that phrase is a collection of two or more than two words which give the meaning other than their own word. For example, come by, आके मिलना. ठीक है, call at, ठीक है, आके मिलना. call on, जाके मिलना. ठीक है, इस तरह जो डिफरेंट जो फ्रेजेस हैं जो अपने मीनिंग से हट के देते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आप कह सकते हैं मेक हेडवे, तरक्की करना. ठीक है, ये बहुत से ईडियम्स हैं. जो ईडियम क्या होते हैं, वो लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, आपकी लैंग्वेज को एक्सटेंसिव एंड इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो डेथ का मैंने जो है वो डिसीज़, DECEASE, डिसीज़, ये वर्ब है. कोई फला फला बंदा डिसीज्ड लास्ट नाइट. ठीक है, ही किक्ड द बकेट लास्ट नाइट. ठीक है, वो वफात पा गया. और इसी तरह वो डिमाइज जो है वो ये नाउन है, इसकी हम वर्ब की तीसरी दूसरी फॉर्म नहीं बना सकते. ये डिमाइज है, डिमाइज ही रहेगा. आई फेल्ट अ बिट ओवरवेल्म्ड एट द सडन डिमाइज या एट द ट्रेजिक डिमाइज ऑफ द फादर ऑफ माई फ्रेंड. समझ रहे हैं ना आपको? इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो. ठीक है, सो बात असल में शुरू कहाँ से होती है और बात निकलते निकलती कहाँ चली जाती है. सो बात हम कहाँ से कर रहे थे शुरू? ग्रीटिंग्स के. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. सो हेलो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो अब बात हो रही थी, वही मेरे जहन में आ गया कि ओवरवेल्म्ड, आई एम फीलिंग री इनविगोरेटेड टुडे. मैं आज जो बहुत एनर्जेटिक, इमोशनल
एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम फीलिंग reinvigorated today, ठीक है. जी. So how was your morning today? इसका उर्दू में बोल दें. ठीक थी, जैसे मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक होती. रूटीन के मुताबिक Yeah. अच्छी थी. It was all right. It was okay. Not different from the other day's routine. It was not different from the routine of other days. ठीक है, या आप इसका ऐसे भी कह सकते हैं. Yeah, it was all right as usual. It was okay. It was good. It was as usual. Not different from the other day's routine. I beg your pardon. माज़रत ख़्वाह हूँ. अच्छा, so how did you travel here? मैं मोटरसाइकिल से आया मैं. अच्छा, जो जब भी सफ़र का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, I traveled here by bike. I traveled here by bus. I traveled from Faisalabad to Islamabad by bus. I always like to travel by bus. I always like to travel by bike. I always travel by my personal transport. Take your call or whatever. Can you please introduce yourself? Okay. Well, my name is Muhammad Sharafat, and as I told you earlier, be brave. You should have the confidence. You should have the level of reassurance. You know all. Just don't think, I don't know, I am not able to translate, I'm feeling it difficult to translate from Urdu to English into my brain. Just pour it out, wrong as you can. जितना ज़्यादा गलत बोलेंगे एनर्जेटिक वॉइस के साथ, जितना ज़्यादा खुद एतमादी के साथ बोलेंगे, the more you speak that way, the more I'll be able to correct you. जितना ज़्यादा आप सही गलत बोलेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपको सही कर सकूँगा. Can you please introduce yourself? Okay, my name is Muhammad Sharafat, and I'm 22 years old. So I have my completed matriculation examination from Faisalabad, and Let me correct you here. Okay, first of all, कोशिश करें कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो don't feel कि you have to throw all the information straight away. Take little breath, calm yourself down, and try and speak steadily, slowly and steadily, slowly and steadily. बोलना सब कुछ है, लेकिन अपने आप को overwork नहीं करना. Don't get yourself overworked. ठीक है? Don't you get yourself overdone with that. So, well, my name is Muhammad Sharafat. I belong to Faisalabad. Recently, I have completed my 2 years of matriculation. Yeah, recently I finished my matriculation exam. I passed it with science subjects. At present, I'm involved in marketing business. I do marketing job at a good institution, at a good organization. Yeah, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि recently I have done my matriculation in science, and at the moment I'm waiting to get enrolled into my further studies. And also part-time I'm doing a little job as well in marketing industry. ठीक है? जी. So now when you will listen to these conversations again and again, conversation guftagoo, when we will talk again and again, you will listen to this conversation again and again, and at the back end you have that knowledge of your tenses as well, and you will rephrase them, rehearse them again and again, and you will get better and better. Okay? Yes. Okay, so tell me a little bit about your hometown, about your city. Okay. Well, my hometown is Faisalabad, and it's famous for textile industries. Shabash, very good. It's a little bit for what
हाँ, इसका आप कुछ चीज़ें खुद बना लेता है बंदा उर्दू में। सबसे पहले पॉइंट ब्रेन में हमने बनाना होता है, फिर उस पॉइंट को हमने एक फ़िक्रे में ढालना होता है, ठीक है? तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो है फैसलाबाद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें लाहौर की तरह ही ये एजुकेशनली बहुत अप जा रहा है। कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टेडियम हैं इसके अंदर 2, ठीक है? इट हैज़ 2 स्टेडियम्स, ठीक है? ये 2-3 चीज़ें गुड, जो चीज़ें जो यूजुअली हर जगह पे होती हैं, वेरी गुड पार्क्स अराउंड, ठीक है? पार्क्स। अब 4 टॉपिक्स आपने ज़हन में बना लिए। सबसे पहला टॉपिक आपका टेक्सटाइल का है, दूसरा टॉपिक आपका एजुकेशन का है, तीसरा टॉपिक आपका कौन सा है कि ये जो यहाँ पे पार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और चौथा मैंने क्या बोला था? अच्छा, और जो था ये गार्डन है। गार्डन वगैरह, पार्क्स वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है? और चौथा आप कह सकते हैं कि मतलब इट्स अ बिग सिटी, पॉपुलेशन city. काफ़ी ज़्यादा, एंड ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ आर अवेलेबल है, ठीक है? वेल, आई बिलोंग टू फैसलाबाद सिटी. The most important thing about Faisalabad is that it is famous for its textile industry, not only in the country but around the globe as well. ठीक है? अभी आपने एक्सप्रेस कर दिया कि ये ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इसको आप और तरह भी कह सकते हैं। Well, I belong to Faisalabad. This is a big city. It is expanding day by day. It's becoming bigger and bigger every day. And it is famous for textile. The clothes and the garments manufactured in Faisalabad are not only famous in the whole of country, but they are being exported everywhere in the world. ठीक है? जी, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो पहले वाला भी आप सुने वो बेटर है। फैसलाबाद इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ नॉट ओनली फेमस इन द कंट्री बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड फॉर इट्स टेक्सटाइल, जी, ठीक है? सेकेंडली, फर्स्टली आपने बता दिया, फर्स्टली. सेकेंडली, there are a number of good quality universities available in Faisalabad. The students do not have to travel longer journeys, longer distances to go to have university educations. There are nearly 10 big universities in Faisalabad, right? And there are a number of good quality colleges where you can have very good quality education. There are hundreds of schools around Faisalabad. Around means pure Faisalabad mein. Third thing which I like most about my city is that it's got all amenities of life. AMENITIES, amenities community. means basic facilities of life. ठीक है? Faisalabad has got all basic amenities of life, whether it comes to shopping, whether it comes to traveling, whether it comes to food, whether it comes to mechanics, whether it comes to any kind of home industry, any kind of thing. You just go outside into the town and you will have access to each and everything. All basic facilities of life are easily available here. The fourth thing which I like about my hometown is that is crammed full of parks. Crammed, CRAMMED, crammed full of parks का मतलब होता है कि यहाँ पे parks की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे parks जो है वो अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल क्रैम की टर्म जो है वो हर वो चीज़ जो दबा दबा के भरी हुई है उसके लिए भी यूज़ की जा सकती है. माई वॉलेट इज़ क्रैम्ड फुल ऑफ मनी, ठीक है? माई सूट केस इज़ क्रैम्ड फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. माई स्कूल बैग इज़ क्रैम्ड फुल ऑफ बुक्स एंड नोट्स. दिस रूम इज़ क्रैम्ड फुल ऑफ चेयर्स एंड सोफाज. दिस गोडाउन, गोदाम को इंग्लिश में गोडाउन बोलते हैं, ठीक है? दिस गोडाउन इज क्रैम्ड फुल ऑफ व्हीट बैग्स, गंदम के थैलों से भरा हुआ, ठीक है? तो क्रैम्ड फुल जो आप टर्म आपको मैंने बता दी, ये भी आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जी, सो आपने अपने टाउन के बारे में बता दिया, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, अपने बारे नाम के बारे में बता दिया, और आपने ये भी बता दिया वेल एट द मोमेंट आई एम इन मार्केटिंग इंडस्ट्री. आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन द मार्केटिंग फील्ड, या आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री. ठीक है बेटे, जी, समझ आ गई ना आपको? यस, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन. सो
Tell me if you have any questions about that. क्वेश्चंस अभी एक क्वेश्चन आया जिन में कि अभी आपने मार्केटिंग का बताया, तो ये मार्केटिंग का बता दो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। At the moment, at the time of the moment नहीं, At the या at the time या at the moment या at present, जी ठीक है। ठीक इन तीनों को डिफरेंट में से किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है। एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट या एट टाइम, जी ठीक है। जी सो लेट्स सम अप दिस सेशन एंड वी टेक अ लिटिल ब्रेक, देन वी स्टार्ट अगेन।